अब साइकोसिस होता है जिसमें आप देयर इज अ लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ रियलिटी. रियलिटी इज समथिंग एल्स एंड you think reality is something else. You think totally against reality. You perceive something else from reality. Like suppose you see a rope in front of you and you perceive it as snake. This is psychosis. Up, it can have medical causes. It can have psychiatric disorders like schizophrenia में psychosis होगा. Postpartum psychosis में psychosis होगा. उसमें psychiatric disorder है. Medical causes हो सकती हैं. It could be delirium. Delirium में hospital stay होता है. It's a cognitive disorder. We will be doing it tomorrow. और मेडिकल कॉजेज क्या हो सकती हैं? किसी ने एक्यूट कोई ड्रग लिया उसकी वजह से उसको रियलिटी उसकी डिस्टॉर्टेड हो. अब साइकोसिस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट होता है डिल्यूजन होने चाहिए उसको. डिल्यूजन की डेफिनेशन है अ फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ. अब देयर आर टाइप्स ऑफ डिल्यूजन. एक डिल्यूजन है परसिक्यूटरी जिसमें आप बिलीव करते somebody is after you, they are trying to harm you. Delusion is a fixed false belief. Then there is a delusion, hypochondrial delusion. इसमें आप believe करते हो you have a life threatening condition or cancer. Belief is a false belief. उसके बाद there is delusion of grandeur जिसमें आप believe करते हो you have special powers and you become something supernatural. Then there is nihilistic belief where you believe like your head is missing or your body is missing, like nothing means anything. It's a strongly held belief in conflict with reality is delusion. Ab delusion, someone is after me, is persecutory delusion. I am a millionaire, while not being a millionaire is a delusion of grandiose. Second component है psychosis का disorganized thoughts. अब disorganized thoughts कैसे पता चलेंगी? जब patient will speak to you, उसमें speech poverty होगी, sentences will not be complete, will not have sound structure, और एक के बाद दूसरी थॉट आ रही होगी. सडन अब्रप्टली आप स्टॉप कर जाएगा पेशेंट, फिर दूसरी थॉट आ रही होगी और एसोसिएशन नहीं होगी. जो बात कर रहे हैं विल नॉट मेक सेंस. उसके बाद देखो दिस इज सेंटर, दिस इज सर्कमफेरेंस, टेंजेंटलिटी होगी. मींस कि ये है पॉइंट सेंटर, एक टॉपिक से दूसरे पे टेंजेंट कर जाएगा, वो डाइवर्ज करेगा फ्रॉम टॉपिक से, या वो सर्कमफेरेंशियल होगी बात उसकी, अराउंड इर्द गिर्द पॉइंट पे नहीं आ रहा, इर्द गिर्द घूम रहा है उसके, नॉट कमिंग टू पॉइंट. थर्ड इसका कंपोनेंट है हेलुसिनेशन होगी. अब हेलुसिनेशन क्या है? इज डिफाइंड एज सेंसरी परसेप्शन occurring without external stimulus. You will feel, taste something or see something which is not present. कोई external stimulus नहीं है उस चीज का. Right? Hallucination is a perception without an existing external stimulus. अब यूजुअली ऑडिटरी जो होते हैं ना हेलुसिनेशन, वो स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं. और अगर टेस्ट स्मेल के हैं ना हेलुसिनेशंस, तो वो तो या सब्सटेंस अब्यूज से होंगे, डिलीरियम से होंगे, या टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी से होंगे. दूसरे हेलुसिनेशन है while you wake up or go to sleep. While you are falling asleep में hypnagogic होंगे, and while you are waking up and see some things तो वो hypnopompic होंगे, और ये होते हैं स्लीप डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड. So psychosis and its 3 components are clear. Something that is not clear in psychosis. Psychosis में क्या होगा? There is loss of perception of reality, could be medical causes or psychiatric causes.
स्किज़ोफ्रेनिया हमने अभी करना है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोसिस होता है। साइकोसिस की 3 मैनिफेस्टेशन है: डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में आपको सेंसरी कोई चीज फील हो रही है, सेंसरी परसेप्शन आ रही है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। दे कुड बी ऑडिटरी, आपको आवाजें सुनाई दे रही है जबकि कोई बोल नहीं रहा। टेस्ट और स्मेल आ रही है जबकि देयर इज नथिंग देयर। जो ऑडिटरी है ना, वो हॉलमार्क है स्किज़ोफ्रेनिया का। और जो टेस्ट स्मेल वाले हैं, दे हैव एन ऑर्गेनिक कॉज, लाइक टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में और डिलीरियम में और ड्रग मिसयूज में। Delusion is a fixed false belief. Delusion is a belief. Hallucination may you feel sensory perception without external stimulus. Delusion is a belief. You believe you are rich. You believe you are president of the world. You believe that people are conspiring against you. They want to kill you. एक वो delusion था कि Bill Gates is trying to put chips in you using vaccine. It was a false fixed belief, right? Was a delusion. Nobody's trying to put chips in you. Then we will do a psychotic disorder, which is schizophrenia. Schizophrenia is characterized by delusion, hallucinations, and lack of insight. The patient in acute schizophrenia, disturbed behavior hoga, disordered thinking hogi, and they will be having positive symptoms. Up only 0.5 to 1% of the population has this disease. Is very less common, very rare, and it's more common in men. And children of the affected parents have 10% risk of having this illness. In pathogenesis, it's unclear, but we have 4 theories. एक है कि there are risk factor obstetrical complications जिनमें होंगी hemorrhage, preterm labor, blood groups का mismatch, वो जो RH incompatibility होती है, fetal hypoxia हो गया. All of these can lead to schizophrenia. दूसरी है कि जब इन लोगों का ब्रेन चेक करते हैं तो उसमें लेटरल वेंट्रिकल एनलार्जमेंट होती है जब उनके ब्रेन स्कैन्स कराते हैं. थर्ड सेज दैट सेंट्रल डोपामीन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इन स्किज़ोफ्रेनिया. तो जितनी भी हमने थेरेपीज देनी है उसमें डोपामीन एंटागनिस्ट देने हैं. एंड अदर सेज के डेंड्रिटिक स्पाइंस जो होती है ना, जो कनेक्ट करती हैं टू न्यूरॉन्स को, उसका लॉस हो जाता है इन स्किज़ोफ्रेनिया. अब इसकी जो 3 मैनिफेस्टेशन है, जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर, इसमें डिल्यूजन्स होंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट होगी, हेलुसिनेशन होंगे. जो स्किज़ोफ्रेनिया के डिल्यूजन्स हैं वो पैरानॉइड और ग्रैंडियोस होंगे. पैरानॉइड, what does paranoid means? The person will be scared, like people are after him, they are trying to kill him. Second, grandiose hoga, the person will think that they are rich or they possess supernatural powers or angels are talking to him, somebody is conveying things to them. Disorganized thought was second manifestation of साइकोटिक डिसऑर्डर. तो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट की स्पीच जो होगी टेंजेंटल होगी, दे विल बी चेंजिंग टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली एंड नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चन, और circumstantial होगी, going around the topic, not answering the question. और hallucinations कौन से होंगे? Auditory, they will be listening to voices, they will tell you that they are listening to voices. ये 3 इस तरह से कंपोनेंट इसके कंप्लीट होते हैं. अब there is a thing called positive and negative symptoms. पॉजिटिव सिम्टम यूजुअली जो होते हैं वो एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया के अटैक में आते हैं, नेगेटिव उसकी क्रॉनिकसिटी को शो करते हैं. अब पॉजिटिव का मीनिंग है behavior that should not be present but is there, like hallucination, delusion, disorganized thoughts, abnormal behavior. But we have to memorize them using ABCD. A for auditory hallucination, B for withdrawal of thoughts, insertion of thoughts. They say that somebody is putting thoughts in them and the thoughts are not their own. C
they will have controlled feelings, like somebody is making them do things. That's what they say. D, delusional perception. What are delusion? They are false fixed belief. They will have false fixed belief of grandiose and of paranoia. They will be scared and saying they have some powers and people are after them. ABCD in acute schizophrenia, positive symptoms. उसके बाद आ जाते हैं negative symptoms. Negative symptoms that should not be there, that should be there, but they are absent. Like social withdrawal हो जाएगा, और ये negative symptom shows that disease is chronic. ठीक है, सारे जो होंगे एब्सेंस होंगे ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, उनका फ्लैट फेस होगा, स्पीच पुअर है, दे विल नॉट बी इंक्लूडिंग देमसेल्फ इन सोशल इंटरेक्शंस, ना जॉब कर रहे हैं, कोई मोटिवेशन नहीं है, दे डोंट फील प्लेजर इन एनीथिंग, right? Flattened blunted affect, they do not feel emotions, lost apathy है, lost, they do not want to do anything, social isolation है, speech भी है, और hygiene भी बहुत खराब सी है. अब डायग्नोसिस हमने कैसे करना है? यू विल हैव टू सिट विद देम एंड टॉक टू देम कि क्या हुआ है. अब हमारे पास जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है स्किज़ोफ्रेनिया का, साइकोसिस के दो कॉजेस हो सकती हैं. दे आर नॉट शोइंग फीलिंग्स. अब साइकोसिस की दो कॉजेस हो सकती हैं. फंक्शनल कॉज का मतलब है नो न्यूरोलॉजिकल बेस, देयर इज न्यूरोलॉजिकली नथिंग इज रॉन्ग विद देम, लाइक डिल्यूजन डिसऑर्डर्स. साइकोटिक डिप्रेशन, डिप्रेशन के सिम्टम्स है, उसमें साइकोसिस आना लग गया. साइकोसिस के अंदर तीन चीजें होती हैं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स. या मीनिया है उसको, और इसके साथ साइकोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं. एक बहुत could be after prepubertal phase, prepubertal psychosis है, acute onset after childbirth, or it could be schizoaffective disorder. Schizoaffective disorder क्या होते हैं? Mood disorder प्लस स्किज़ोफ्रेनिया, तो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं. उसमें स्टेटमेंट में आपको लिखा हुआ आएगा सिनेरियो में, that the patient was suicidal and was experiencing low moods. अब ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, मींस दे हैव फिजिकल पैथोलॉजी इन्वॉल्व. ये कब होंगे? ये तब होंगे जब ड्रग लिया होगा, एविडेंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज होगी, किसी ड्रग के साइड इफेक्ट होंगे, कुड बी लीवाडोपा, मिथाइल डोपा, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होगी, डिलेरियम में, डिमेंशिया में, हंटिंगटन डिजीज में. ये सारे they will have neurological base and physical pathology is present. अच्छा, chronic state में क्या होता है? Negative symptoms more common होते हैं. Although अगर chronic state में चल रहा है और उसको relapse होता है disease का, तो again ये acute वाले symptoms आने लग जाएंगे, auditory hallucination, broadcasting of thoughts, controlled feeling, impulses, passivity, like somebody is making them do things, और delusions होंगे. अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में आपने रूल आउट करनी है ये वाले सारे के ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स ना हो. ठीक है, डायग्नोसिस एटलीस्ट 1 month or 2 ऑफ डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, नेगेटिव सिम्टम्स, एंड दे शुड कंटिन्यू फॉर 6 months. अब ड्रग ट्रीटमेंट है. फॉर ड्रग ट्रीटमेंट वी हैव एंटीसाइकोटिक्स. अच्छा, किस चीज को अब हम कम कराएं? क्या ड्रग दें, क्या चीज कम कराएं हम? फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम क्या करें? डोपामिन को इंक्रीज करवाएं, डिक्रीज कराएं? ठीक है, डिक्रीज कराते हैं डोपामिन को. जब हम डोपामिन को डिक्रीज कराते हैं तो कौन सी डिजीज होती है? पार्किंसन हो जाती है. तो इसके साइड इफेक्ट्स, जो इसके ड्रग के साइड इफेक्ट हैं, पार्किंसनिज्म काज करते हैं.
अब है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, इनको हम फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी कहते थे। इनके नेम्स मेमोराइज करने बिकॉज पास्ट पेपर में पूछे हुए हैं। हेलोपेरिडोल, राइट, क्लोरप्रोमेज़िन। अब इंडिकेशंस क्या है फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स की? स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, मीनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिलेरियम, इन सब में ये देने थे। साइड इफेक्ट क्या होंगे? सिंस आप क्या कर रहे हो, डोपामीन का एंटेगनिस्ट दे रहे हो, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आएंगे। दूसरी बात है, जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है उसका मेजरली तो वो डोपामीन को ब्लॉक करे, लेकिन जब साइड इफेक्ट आएंगे तो वो सेरोटोनिन ब्लॉकेज के भी आएंगे, हिस्टामिन ब्लॉकेज के भी आए, ऐसे मस्करेनिक ब्लॉकेज भी होगा और एपिनेफ्रिन ब्लॉक भी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हिस्टामिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, ये सारे छोटे छोटे हैं, ये सारे छोटे छोटे हैं, और ये इन इन सबको ब्लॉक कर सकते हैं ये वाले। इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड स्मॉलर है, तो इन सब के साइड इफेक्ट आएंगे। अच्छा, उसके बाद पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स क्यों आएंगे? पिरामिडल जो होते हैं उसमें वीकनेस होती है बॉडी की, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो कि पिरामिड्स में रन करते हैं, पिरामिड्स ऑफ मेडुला में रन करते हैं, वीकनेस होता है, ये स्ट्रोक की वजह से आते हैं। अब ये जो हम दवाइयाँ डोपामिन एंटागनिस्ट दे रहे हैं उससे एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो बेसल गैंग्लिया जो क्या कंट्रोल करता है, आपकी मूवमेंट की मॉड्यूलेशन करता है, मूवमेंट इनिशिएट करवाने की नहीं, मूवमेंट की मॉड्यूलेट करता है कि कब रुकना है कब चलना है। स्टिफनेस आ जाती है, कॉगविल रिजिडिटी आ जाती है जब एक्स्ट्रा पैरामिडल आपके खराब होते हैं ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये डैमेज कर देते हैं मूवमेंट को। अगर बिल्कुल ही पैरालिसिस करना है तो वो पिरामिडल सिस्टम से होता है, कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट से होता है, ये मॉड्यूलेशन ऑफ मूवमेंट खराब हो जाती है। दिस हैपेंस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? रिस्पॉन्स टू डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकेज जो हम यूज कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आने कौन कौन से हैं? एक्यूट डिस्टोनिया, एकाइनेसिया, एथीसिया। अब 4 आवर्स में जो क्विकली स्टार्ट हो जाएगा विद ड्रग थेरेपी, वो एक्यूट डिस्टोनिया होगा। 4 डेज में एकाइनेसिया होगा, एकाइनेसिया वो स्लोइंग ऑफ मूवमेंट। ठीक है, और एकाथीसिया वाज रेस्टलेसनेस। इन 4th मंथ में एंड ऑफन परमानेंट टार्डेटिव डिस्काइनेसिया होगा। लेट मी शो यू सारे कैसे हैं। Welcome back. In this video, we'll talk about the side effect of antipsychotic medications. There are 4 main side effects that are present in all antipsychotics, or any other medication that blocks the action of dopamine. Starting with acute dystonia, which occurs very quickly, डिस्टोनिया था, usually in ये नेक की hours or मूवमेंट से days. एसोसिएटेड होता है एंड इट स्टार्ट्स विद इन This is आवर्स। characterized by sustained muscle contraction, and this can affect any muscle in the body. The question normally mentions a patient who is taking antipsychotic medication, and his eyes are closed shut and he can't open them, or his mouth is wide open and he can't close it. The treatment for dystonia is benzotropine or first-generation antihistamines, like diphenhydramine. Next we have akathisia, which takes days to develop. It's characterized any muscle in the body. The question normally mentions a patient who is taking antipsychotic medication, and his eyes are closed shut and he can't open them, or his mouth is wide open and he can't close it. The treatment for dystonia is benzotropine or first-generation antihistamines, like diphenhydramine. Next we have akathisia, which takes days to develop. It's characterized by restlessness. So the patient would be unable to sit still, they would have to keep moving around or maybe keep moving their legs. It's quite the opposite of dystonia. We treat it with 3 Bs: beta blockers, benzodiazepines, and benzotropines. If the patient is taking antipsychotics for many weeks,
they can develop Parkinsonism. Because as we know, the pathophysiology behind Parkinsonism is the lack of dopamine, and antipsychotics blocks dopamine. Presentation-wise, expect a wide range of Parkinsonism symptoms, ranging from tremors to rigidity to bradykinesia, and etc. In this case, we don't stop the antipsychotic medications, but instead we give the patient benzotropine or amantadine, which replenishes the brain reserve of dopamine. And if the patient is taking antipsychotic for many टार्डेटिव months, at डिस्काइनेसिया में least क्या होता 6 है? months, लिप they can develop tardive स्मैकिंग होती है जो कि dyskinesia. इसकी हो रही है. It causes a repetitive contraction of any muscle of the body, characteristically lip smacking. We treat it with the monoamine oxidase inhibitor, vilbenzine, tetrabenzene, or clozapine. So we have acute dystonia जो within hours start हो जाता है, like वो involuntary contraction of neck movements होती है और इसके लिए बेंस्ट्रोपीन देनी है. एकेथीसिया में क्या हो रहा है? अर्ज टू मूव रेस्टलेस होता है, इसमें हैंड मूव कर रहा होता है. इसको 3 B से ट्रीट करना है: बीटा ब्लॉकर, बेंजोस and neuroleptic drugs. It is stuck. और उसके बाद डिस्काइनेसिया जो स्लोनेस ऑफ मूवमेंट होती है, सूडो पार्किंसम, बिकॉज इट्स एक्चुअली नॉट पार्किंसम, इज कॉज ड्यू टू ड्रग साइड इफेक्ट. उसमें एंटीकोलिनर्जिक बेंस्ट्रोपीन दे रहे हैं, एमेटिडीन दे रहे हैं. उसके बाद टार्डेटिव डिस्काइनेसिया है. टार्डेटिव का मतलब है स्लो डिस्काइनेसिया, स्लो डिस्काइनेसिया स्टार्ट हो रहा है और लिप स्मैकिंग इसमें हो रही होती है. और इवन दो आप डिसकंटिन्यू भी कर दो ड्रग्स में, ये होते हैं ऑलमोस्ट 4 to 6 months बाद आफ्टर यू टेक एंटी साइकोटिक्स, एंड इट्स ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल. तो ये सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है. साथ में एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स भी आएंगे. एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन. डोपामीन ब्लॉकेट से सिर्फ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे, हाइपरप्लोरेक्टिनीमिया हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा और एमेनोरिया भी होगा. उसके बाद हमारे पास आते हैं बेटर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, और इनको हम सेकंड जनरेशन भी कहते हैं. सेकेंड जनरेशन जो थी वो एक तो D2 एंटेगनिस्ट के साथ सेरोटोनिन एंटेगनिस्ट भी है. क्लोजाबीन, ओलिंजापीन, पीन पीन से हैं ये सारे. रेस्पेरिडोन, लोरासिडोन, देवर मेजा प्रोमेजापीन, जीन्स थे इसमें. और इसमें पाइंस वाले जो है ना, वो एटिपिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स नहीं होते, लेस होते हैं. लेकिन इसमें मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स थे, लाइक डिसलिपिडीमिया, टाइप 2 डायबिटीज स्टार्ट हो जाती है, वेट गेन स्टार्ट हो जाते हैं. अच्छा, एंटीसाइकोटिक स्टार्ट करने व्हेन यू सी पॉजिटिव सिम्टम्स फॉर ABCD. A for auditory hallucination, B for broadcasting, C for controlled feeling, D for delusions. Or they will take 2 to 3 months to start, and you will have to continue till 1 to 2 years. If the disease is in chronic stage कैसे पता चलता है? नेगेटिव सिम्टम्स से, तो लॉन्ग टर्म देने पड़ेंगे. साथ साथ आपको मॉनिटर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स के लिए. उसके बाद ये तो फर्स्ट जनरेशन का है. सेकंड जनरेशन के नाम किसी को याद होए? सेकंड जनरेशन के या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के क्या नेम है? पाइन से याद करते, क्लोंजापीन, ओलिंजापीन, and they cause dyslipidemia, weight gain, metabolic disturbances. साथ साथ वो व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर भी कॉज करती है.
यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स दिए हुए ड्यू टू डोपामीन ब्लॉकेट, एक्स्ट्रापिरामिडल इफेक्ट, साथ गायनेकोमेस्टिया, ग्लेक्टोरिया, एमेनोरिया, cholinergic dry mouth, blurred vision, impotence, constipation, urinary retention. There is a thing called neuroleptic malignant syndrome. जब antipsychotics ले रहे होते हैं तो patient presents with fever, tremor and rigidity with autonomic instability. It's और ये होती है 7 to 10 days after you give them antipsychotics. And it's rare. इसमें फीवर, रिजिड मसल, मेंटल स्टेटस चेंजेस भी आ जाती हैं। जब आप लैब टेस्ट कराते हो तो क्रिटिनिन काइनेज एलिवेटेड होता है क्योंकि मसल ब्रेक डाउन हो रहा होता है। और इट कैन ऑल्सो कॉज एक्यूट रीनल फेलियर। जब कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं उसमें प्रोटीन भी ज्यादा हुआ होता है, मायोग्लोबिन यूरिया हो रहा होता है जो कि रेप्टोमायोलाइसिस की वजह से हो रहा होता है। तो इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। उसमें भी ऐसे ही होता था। और इसको हम डेंट्रोलीन से मसल रिलैक्सेंट से करवाते थे। यहाँ पे हमें डोपामीन एगनिस्ट भी देना पड़ेगा, ब्रोमोक्रिप्टीन और मसल रिलैक्सेंट। साथ साथ क्या करना है, पेशेंट की स्पॉन्जिंग करानी है, हाइपोथर्मिया और हाइड्रेट कराना है। कोई मुझे बता सकता है कि हाइड्रेट क्यों कराना है? हाइड्रेट इसलिए करवाना है क्योंकि एक्यूट एकेआई हुई है, एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से डेथ हो सकती है, तो हाइड्रेट कराना है उसको। सारे ग्लोमेरुलाई में रेप्टोमायोलाइसिस के मसल प्रोटीन्स वहां पे फिक्स हो रहे हैं ब्रेक डाउन करने के बाद। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन स्टॉप कर देनी, स्पॉटिव थेरेपी पे आईसीयू में पर्सन को एडमिट कराना है, हाइड्रेट करो उसको, हाइपरथर्मिया को उसको रिड्यूस करो। उसके बाद डेंट्रोलिन सोडियम देना है विद ब्रोमोक्रिप्टीन। अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो 20% आउट ऑफ 100 पीपल डाई। उसके बाद कार्डिक एरिथमियाज हैं, ये क्या करते हैं, एंटीसाइकोटिक्स क्यूटीसी इंटरवल को इंक्रीज कर देते हैं और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और टॉर्सेट डी पॉइंट्स विच कॉज सडन डेथ। टॉर्सेट डी पॉइंट्स क्या होते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होते हैं एंड दे कैन कॉज डेथ। ये तो होगी सारी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। अब है इसकी साइकोलॉजिकल थेरेपी क्या करनी है। जनरल पेशेंट को एजुकेशन देनी है, उसके पेरेंट्स को अबाउट दिस डिजीज, पेरेंट्स एंड फैमिली को। उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली एजुकेशन हो गई। सोशल ट्रीटमेंट में क्या करना है, उसको सोशल रिहैबिलिटेशन करना है क्योंकि ना उनकी अकोमोडेशन और एम्प्लॉयमेंट चली गई होगी और साथ में उसके सोशल रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हुए होंगे। तो इनके लिए स्पेशल हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, सुपरवाइज अकोमोडेशन भी हो सकती है बिकॉज इन लॉन्ग टर्म दे माइट नॉट बी एबल टू लिव अलोन। उनको कंटिन्यूस डिल्यूशंस हो रहे हैं, थॉट थॉट्स ब्रॉडकास्ट हो रही हैं। सुपरवाइज अकोमोडेशन इनके लिए विद शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट, वो भी अंडर सुपरविजन। दिस इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम और केयर प्रोग्राम अप्रोच फॉर schizophrenic patient. To try to solve this question, a 47-year-old homeless woman attempts suicide by jumping off an overpass. She is admitted for the treatment of several fractures. Tearfully, she reports to the physician that devil worshippers have tormented her for many years. She is convinced that her persecutors have managed to infiltrate the ward, masquerading as nurses and maintenance workers. She is treated with risperidone and sertraline. After 3 weeks, her mood is greatly improved. She is not suicidal, but her belief about persecuted have not changed. The patient had 3 similar episodes in the last past 10 years. Choose the most appropriate diagnosis. उसकी जो medication है, this is SSRI, antidepressant. Risperidone is atypical or second generation antipsychotic. It's actually schizoaffective disorder. It's actually schizoaffective disorder. Mood disorder
अगर सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया होता, we would not have been giving SSRIs. Schizoaffective disorder. अब schizoaffective क्या होता है? Mania और depression coexist with schizophrenia. स्किज़ोफ्रेनिया के साथ mania और depressive mood disorder के साथ होते हैं ये लिंक. Psychotic symptoms जैसे hallucination, delusion, disorganized thought persist with mania and depression. ये schizoaffective disorder होता है. अच्छा, schizoaffective disorder को ट्रीट कैसे करेंगे? How will you treat a schizoaffective disorder? एंटीडिप्रेसेंट से, मूड स्टेबलाइजर से और एंटीसाइकोटिक से. SSRIs और मूड स्टेबलाइजर्स हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मूड डिसऑर्डर्स हैं. और एंटीसाइकोटिक्स क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इन स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर उसमें साइकोसिस का एलिमेंट भी है. Which is the best mood stabilizers we have? What is the best mood stabilizer we have? We have lithium as best mood stabilizers, but we use lamotrigine and sodium valproic acid as well. ये तीनों हम mood stabilizers की तरह use करते हैं, but lithium is our drug of choice. But in some cases we are unable to give it. In pregnant women we cannot give lithium. और lithium के side effects क्या-क्या थे? Acute side effects were tremors. Long term में hypothyroidism. How do you think lithium causes hypothyroid? Lithium जो है ना goitergenic substance है. अब goitergenic substance क्या करती है कि inhibit कर देती है thyroid hormone का release from thyroid gland. तो gland increase करते जाते हैं overstimulation की वजह से, but is unable to release the hormone, तो hypothyroid. अब nephrogenic diabetes insipidus, इसमें it's not central, ADH क्वांटिटी में पूरा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ट्यूब्यूल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करवाने देता लिथियम. एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्टिपेडियस की सबसे कॉमन कॉज लिथियम है, क्योंकि वो ट्यूब्यूल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करवाने देता. तो हम क्या देते हैं इसको ट्रीट करने के लिए? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्टिपेडियस को एमिलियोराइड देते हैं ताकि वो इस चैनल को ब्लॉक कर दे और लिथियम अंदर ही ना जाए. लिथियम अंदर जाता है. लिथियम और सोडियम जो है पीरियोडिक टेबल में साथ होते हैं, लिथियम सोडियम. तो लिथियम क्या करता है? सोडियम वाले चैनल से एंटर हो जाता है बिकॉज ऑफ सिमिलर साइजेस. जब हम एमिलोराइड देते हैं तो वो एंटर नहीं होता. इस तरह से हम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को कंट्रोल करते हैं. अच्छा, ये हाइपोथायराइडिज्म ऐसे कॉज करता है कि गाइट्रोजेनिक सब्सटेंस है ये इनहिबिट करवाती है, रिलीज ही नहीं करने देती थायराइड हार्मोन का फ्रॉम थायराइड ग्लैंड. स्टिमुलेट हो के वो बड़ा होता जाता है ग्लैंड, बट हार्मोन रिलीज नहीं कर सकती. इट्स अ गाइट्रोजेनिक सब्सटेंस. A man 22-year-old is admitted for assessment, wandering in the streets saying he's being controlled by radio waves from 5G mobile phone towers. He hears voices being critical about him. After talking to his family, it is clear that he has these symptoms from last 6 weeks.
What do you think he is suffering from? Which pharmacological treatment is most appropriate to prevent relapse in future? What other ways can help managing this patient? Yes, it's schizophrenia. Pharmacological treatment is most appropriate. हेलुसिनेशन भी है, डिल्यूजन भी है इसमें। देखो, हेलुसिनेशन है, आवाजें आ रही हैं उसको, साथ डिल्यूजन भी है दैट पीपल आर क्रिटिकल अबाउट हिम। ये डिल्यूजन हो गया, और ये बीइंग कंट्रोल्ड डिल्यूजन्स भी है, हेलुसिनेशन भी है उसको। स्किज़ोफ्रेनिया एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंटी साइकोटिक्स हैं, और इनके नेम्स लिख रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है। व्हाट आर अदर वेज ऑफ मैनेजिंग दिस पेशेंट? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें फैमिली एजुकेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसके बाद सोशल ट्रीटमेंट में सोशल रिहैब था, सुपरवाइज्ड इनकी थी एम्प्लॉयमेंट, सुपरवाइज्ड अकोमोडेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी केयर प्रोग्राम अप्रोच था। आगे 24-year-old male presents to outdoor department with history of bizarre behavior. He says that he hears voices of his late father. Hearing voices. He also believes that his wife is giving him poison and he does not trust her. This is delusion. जो trust नहीं कर रहा, जो voices सुन रहा है वो hallucination है. He is socially withdrawn and does not want to attend family gathering. इसमें बहुत पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स हैं. What is the diagnosis? Name 2 drugs. Name लिखने हैं इसमें. To treat this condition, 2 serious side effect of the drugs used. कैसे ये स्किज़ोअफेक्टिव है? कोई उसने मूड की बात नहीं की. सोशली विदड्रॉन, नॉट अटेंडिंग फैमिली गैदरिंग्स, ये तो नेगेटिव सिम्टम्स हैं उसके. सोशल आइसोलेशन, apathy, loss of drive, flattened affect. Name 2 drugs. फर्स्ट जनरेशन के नाम क्या थे? हेलोपेरिडोल. सेकेंड जनरेशन में ओलेंजापीन. 2 मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट. ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट कॉज करते हैं, जिसमें एक्यूट डिस्टोनिया, एकाइनेजिया, पार्किंसनिज्म, गायनेकोमेस्टिया, क्लेक्टोरिया, एमेनोरिया. बट ही इज अ मैन. बट गायनेकोमेस्टिया तो इसमें भी होगा. उसके बाद ओलेंजापीन क्या करते हैं? मेटाबॉलिक. The person becomes obese, dyslipidemia. A 38-year-old female is brought to psychiatry outdoor with history of fear of being killed. Her continuous efforts to find a secure place to hide. On counseling, she says that she hears 2 voices talking to each other about her. She cannot see those people and don't recognize the voice as well, but she can clearly hear them planning to kill her. What is your diagnosis? Write down 8 side effects of the treatment. What is your diagnosis?
Schizophrenia भी है, delusion भी तो है, false fixed belief that people are trying to capture her, people are paranoid, जिसको मैंने शुरू में कहा था paranoid उस वक्त, कितनी paranoid है वो, कितनी scared है that people are after her, they are trying to kill her. Paranoid delusions आप लोग identify नहीं कर रहे. Auditory hallucination perfect fine. Paranoid delusions भी तो है इसको. Write down 8 side effect. अब 8 side effect में headings बनानी है. Due to dopamine blockade, due to cholinergic blockade, right? Weight gain, metabolic disorders जो start हो जाते हैं, type 2 diabetes, dyslipidemia. A 30-year-old gentleman was diagnosed with schizophrenia, was started on oral phenothiazines. After about a week, he presents to emergency department with stiff body, fever, in drowsy dehydrated state. His lumbar puncture report did not favor meningitis. What complication of treatment has occurred in this patient? What complication of treatment has occurred? उसको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया तो एंटीसाइकोटिक्स खिलाते हैं. जब एंटीसाइकोटिक्स खिलाते हैं, फीवर हो जाए, बॉडी स्टिफ हो जाए, तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है. विच एबनॉर्मल लैब, अब लैब में क्या करवाएं हम, जो पॉजिटिव आएगा, creatinine phosphokinase will be elevated. Give 3 essential steps in the treatment. हाइपोथर्मिया इंड्यूस करवाओ स्पॉन्जिंग से, एंटीपायरेटिक्स से, हाइड्रेट करो आईवी फ्लूइड्स देके उसको, टू प्रिवेंट एकेआई. एंटीसाइकोटिक्स को स्टॉप कर दो, साथ में ब्रोमोक्रिप्टीन और डेंट्रोलिन सोडियम दो, मसल रिलैक्स कराने के लिए. अब मदर ऑफ 20-year-old gives history that her son is having auditory hallucination, progressive social withdrawal, delusion, frequently of a derogatory nature for past 6 months. He is most likely suffering from schizophrenia. Write down positive and negative symptoms of this illness. Positive symptoms were A, B, C. A for auditory hallucination, B for broadcasting, C for control feeling, D for delusions. And negative symptoms were social withdrawal, poverty of speech, poor self-care hygiene, apathy, flattened affect. Name and classify pharmacological group of drugs used in the management with 2 examples of each drug. A 50-year-old man just discharged from psychiatric ward is brought to emergency with 105 fever, high grade है ये. He is confused, irritable, he has generalized muscle rigidity, dysarthria. Dysarthria is unable to speak. His blood pressure is 160 by 110. Creatinine kinase is 4 times the normal. Yes, it's neuroleptic malignant syndrome. How will you treat? पहले तो उसकी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन को स्टॉप कराओ, आईवी हाइड्रेट कराओ उसे, उसका फीवर को नीचे लेके आओ 105 से, and then you give dentroline sodium or to reduce muscle spasms, relax muscle. A 30-year-old male presents in psychiatric OPD. He says that he has been chased by assailants who were trying to kill him because he was president of America. अगर somebody says they are president of America while they are not, तो ये कौन सा delusion है? ये कौन सा type का delusion है? उसने कह दिया I think I'm the president of America. Grandeur है ये. और being chased by assailant है delusion of paranoia है ना, persecutory और paranoia है ये. उसके बाद his brother reports that he is confined to his house and talks of hearing voices, ये हो गया hallucination, that tell him that he will be soon be murdered. What is your diagnosis? What drugs would you give him? And list 2 groups and give examples from each. Give side effects of these group of drugs. A 21-year-old man is brought to emergency because he has not slept, bathed,
eaten for past 3 days. His family states that for last 6 months he has been locking himself in room, talking and smiling to himself, and now he's convinced that a fellow student was stealing his thought. ये implanting thoughts, stealing thoughts, ये सारे acute के थे symptoms, acute or positive symptoms. What could be the most likely diagnosis? Manage what are main neurological side effect you are concerned from the drug treatment. अच्छा management में आपने लिख दिया antipsychotics. You wrote about social therapy, psychological therapy. उसके बाद neurological side effects बता रहे. Neurological side effects में extra pyramidal symptoms लिखने हैं सिर्फ neurological में सिर्फ neurological लिखने हैं. You cannot write weight gain and other things. सिर्फ neurological side effects लिखने हैं. An 18-year-old male presented to you in emergency in the state of agitation, fighting with paramedics. On further inquiry, he says that he is a CIA agent. ये हो गया delusion of grandeur. And the paramedics are terrorists. Delusion of persecution. When nurse tries to check his BP, he threatens to kill her. He also told that he has voices about talking about missions. What is your diagnosis? Give two differential diagnoses. इसके DDs क्या होंगे? वो तो असली डायग्नोसिस हो गया. स्किज़ोफ्रेनिया तो असली डिसऑर्डर हो गया ना. जो बुक में टेबल में लिखा हुआ है अदर फंक्शनल साइकोसिस में लिखना है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, साइकोटिक डिप्रेशन, मैनिक एपिसोड और कुड बी ड्रग इंड्यूस्ड, कुड बी स्किज़ोअफेक्टिव, डिप्रेशन विद साइकोसिस, सब्सटेंस अब्यूज हो सकती है. पैरानोया पैरानोया यू कैन नॉट राइट इन डीडी में लिखना है डिल्यूजन डिसऑर्डर, साइकोटिक डिप्रेशन, मैनिक एपिसोड or drug induced psychosis. Paranoia is a symptom, it's not an independent. आगे देखो. A 28-year-old man comes to you, says that he believes he is being followed by CIA, but he has no proof of it. He also hears voices of CIA agent who talk about him. He's lost his 2 jobs when he started having the above symptoms. What's the answer of this? A 20-year-old girl is brought by her mother in OPD, describing that her daughter is having odd behavior at times. Mother also noted that she is having abnormal thoughts relating to close relatives and religion. She is antisocial and changes her mood rapidly. What is the most likely diagnosis? Yes, this is schizoaffective disorder. Changes her mood. They wrote about mood changes. अब पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम ऑफ दिस डिजीज स्किज़ोफ्रेनिया का लिखना है. वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या थी? वी हैव SSRIs, we have mood stabilizers, antipsychotics, साथ में थेरेपी, social rehab. अच्छा, Mrs. J. Ahmad is 30-year-old married with mother of 4 children. For a number of months, she has been experiencing repetitive thoughts of serious accident occurring to her child and is unable to put these thoughts out of her mind. She also complains that thoughts are interfering in her daily routine. In addition, she reported dissatisfaction with her marriage, problems in managing children. She has considered committing suicide. She has been examined and investigated by a physician, but nothing abnormal has been found. What is your primary diagnosis? देखो इनिशियली रिपीटेटिव थॉट्स आ रही हैं, ऑब्सेशन है, लेकिन कंपल्शन कुछ है नहीं.
तो ओसीडी नहीं है ये। उसके बाद डेली रूटीन में काम नहीं कर सकती, शी इज डिससेटिस्फाइड मींस नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी रिलेट्स विद मूड डिसऑर्डर। So it's a mild form of schizoaffective disorder. Two classes of drugs used in this condition, SSRIs plus antipsychotics use करें and give side effects of these group of drugs. Schizoaffective क्या होता है? Schizophrenia, hallucination, delusions with mood disorder like depression or mania. अच्छा, अब postpartum psychosis को रिवाइज करें. It's a rare disorder. It occurs in 0.1% of the childbirth. Or already women will have a known psychiatric disorder like bipolar disorder, depression, psychosis, schizophrenia, schizoaffective disorder. इन सब में ये already women का diagnosed होगा और वो medication पे होगी, but due to pregnancy she will have stopped taking these. और after delivery के 2 weeks they will have postpartum psychosis. अब उसके क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? साइकोसिस में 3 सिम्टम्स पूरे करने होते हैं: डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स. Up, she will be depressed, she will think something is wrong with her baby, she will try to kill the baby, she will not take care of the baby, and also she might try to kill herself. तो इसको हॉस्पिटलाइज करना है, ईसीटी देनी है और एंटीसाइकोटिक्स भी स्टार्ट कर देने हैं. At 2 days after delivering a healthy full-term baby girl, a 25-year-old woman becomes acutely agitated, disoriented. She refuses to feed her baby, stating that she is the product of a sinful relationship with devil. She hears voices telling her to drown her daughter if she wants to save her soul. ये blues हैं. She is killing the baby. She is killing the baby. उसको आवाजें आ रही हैं. Hearing voices. ये postpartum psychosis है. She is killing the baby. She thinks her baby is a product of sin. तो delusion हो गया ये. She hears voices, auditory hallucination हो गए. हाँ, 2 days की हिस्ट्री है ना, within 2 weeks होना होता है ना. 2 days की हिस्ट्री तो बिल्कुल ठीक है. सिम्टम्स इतने स्वेयर आ रहे हैं, यू शुड नॉट राइट ब्लूज. इतने स्वेयर है, शी इज अबाउट टू किल द बेबी. इतने स्वेयर सिम्टम्स हैं. एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, एंटी साइकोटिक्स.